Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, a very happy new day of the week. So before starting, let me just go on Facebook and check who is live with me at the moment. Okay, so I'm just checking. Okay, so I can see myself. And it's still 1 minute to go and I can wait till then. So while I'm waiting, those of you who are live and already watching me, you can let me know in the comment box, what do you think the caption is? What do you think I plan to talk about today? So if you have any idea, you can just let me know what you think today's topic is going to be about. So I can just start with it. Okay. So I just hope that everyone got my, post within time regarding the time uh, that I was going to go live in 10 minutes. Because there are some people who are saying that they do not get my notification, and I don't know why aren't they getting my notifications. So the setting is on. So those of you who have, who are following my page and they are regularly, commenting on my posts, so they're regularly getting these messages. So I haven't, changed the settings or anything of the sort. So it's over there. And I just hope that you people get the notification in time. Okay, so now let me just come back to my topic. And you know what, today's topic, it's about, like you might have read from the caption, silence. So what I plan to talk about, it's that how we can embrace silence. Like what are the things that are associated with silence when we observe silence. So it's a very strong feeling. Actually, it's a I would rather say it's a very strong tool. If every one of us, if we just start observing silence, there's so much we can learn from silence. So that's what I want to talk about today. It's all related with silence and how we can embrace silence. So those of you who are watching, do let me know through your emoji so I know you are live and you are watching. Okay, so I'm just, I just went back to my Facebook to check out who is live over here with me. Okay, well, you know what, you can, just pour in your comments when you feel like. So first of all, what silence is often overlooked in this space, in this fast-paced world, and but yet it holds immense power within itself. So it has the power that can rejuvenate our minds and our souls if we practice silence. And silence, when we say embracing silence, it doesn't necessarily mean that we are embracing silence, the without sound. We are not embracing that. Rather, we are finding moments of tranquility within that silence. When we are silent, we are prone to observe so much about ourselves, about our personality, about things that mean a lot to us, or maybe things that are, hurting us at the moment. So in that particular silence, we deal with ourselves. We come to know, like we have this realization of who are we in reality. So this is the power of silence. This is what silence does to us, to humans. So let's explore, if we explore, I would be like exploring daily life examples as well. So you can, resonate with what silence does to us in our real lives. So starting like with our points,
I would say like every morning when I go for vlogging or for walking. So thank you so much. Whoever has joined in, you can just let me know in the comment box, whoever you are, and I'll just take your comment. And I was talking about how we can embrace silence. So in the morning when I go for my morning walk or the morning ritual or the vlogging, so over there, like I have plenty of time to observe. And since mostly I'm doing the walks um, just with myself, so I myself am my company along with the nature. So in that moment, like, I can observe the silence. So it's not necessary that like people think that you need a company to do walks or exercise or your morning chores or your rituals or whatever. So this there's a need which everyone feels, that we should be accompanied by other people. But when I'm doing my vlogging or when I'm doing the morning walk, I do not feel that need, for the simple reason that I'm observing each and everything that is around me, and I can make out so much that is going on in my surrounding, in the nature. So when you are uh, embracing this habit of silence without having any company, you come to observe so much, and you come to you're observing those things which in normal life you do not observe. Like you're observing the nature in its true sense. You are observing the petals or the flowers or the shape of the flowers, or even the colors of the colors of the leaves and the flowers and everything. And you are really appreciating them for what they are, rather than just going around for their fragrances or their colors, because everything in nature, it attracts you. So it's the same with human beings. So the more glorious you are, the more appealing you are more attractive to others. But the thing is that silence, it teaches you a lot. You do not look at the appearances, you go deeper. So so the power of silence, and when you're embracing silence, that's the quality it's giving you. You're embracing the things beyond their surface meaning, so you're getting inside it. So in the same way, जब आप silent होते हैं and you are observing silence, so आप जो है अपने अंदर की भी जो खूबियाँ होती हैं ना, उनको जो है एनालाइज कर रहे होते हैं, और वो निखर निखर के आपके सामने आ रही होती हैं. ट्राई टू ऑब्जर्व दिस कि भाई साइलेंस की जो है, व्हाट्स द पावर ऑफ साइलेंस. Similarly, अगर आप जो है, like there are many people who would be like doing their morning routines, and then you can observe this silence, like in complete contemplation. जिस तरह आप जो है सुबह के टाइम जो है नमाज पढ़ते हैं, so you observe that or you perform that prayer in silence, rather than कि आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है या लोग बोल रहे हैं. You cannot contemplate in silence when you're offering prayer. So you need silence. So ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें भी जो है, आप जो है जब साइलेंस में जो है प्रेयर कर रहे होती हैं, तो though you are in front of Allah and you are observing it in complete silence, but आपका और अल्लाह का जो मामला होता है, the way you are transforming, the way you are praying, it's a completely different feeling altogether. Similarly, अगर जो है, like if you start your day in silence, one by praying, and secondly, rather than checking your phones, जिस तरह पास लोगों की आदत होती है, जैसे ही वो सुबह उठते हैं, बिस्तरों से निकलते हैं, अभी आंखें खुली नहीं होती, तो मोबाइल हाथ में होता है और उस पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि भाई किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं, क्या हुआ हुआ है, क्या नोटिफिकेशंस हैं. सो इफ़ यू जस्ट ट्राई टू गेट अप इन द मॉर्निंग, अपनी सेंसेस को जो है आपस में जो हार्मोनाइज करने दें, फ्रेश जागें, बजाय कि आप अपने जो है डिवाइसेस में गेम है और डिवाइसेस में जो सर्च करें कि भाई क्या नोटिफिकेशंस है, क्या नहीं है. सो पहली चीज़, इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, आपकी जो मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू लुक एट द गैजेट्स. रादर आप जो है
कंसंट्रेट करें व्हेन यू आर गेटिंग अप. यू हैव टू सी कि भाई आपके पाँव ज़मीन पे लगे हुए हैं, आपका बॉडी पोस्चर ठीक है. आप क्योंकि डेफिनेटली व्हेन यू आर गेटिंग अप, यू कांट जस्ट rush out of the bed. You have to have your posture, you have to have your balance. बैलेंस के लिए आपने पाँव ज़मीन पे लगाने हैं ताकि आपके माइंड को सिग्नल्स जाएं कि ओके नाउ यू आर अवेक एंड यू हैव टू गेट अप. क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप एकदम से बिस्तर से निकले, पाँव ज़मीन पे नहीं लगे हुए, आधे पाँव हवा में आधे बिस्तर पे हैं, और आप जैसे ही उठें तो आपका बैलेंस जो है लूज हो सकता है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम ये चीज़ें जो है नॉर्मल रूटीन में ऑब्जर्व नहीं करते. ऑब्वियसली तेजियाँ बड़ी होती हैं. सो चाहे जो है आप ग्रो अप कर रहे हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, तो ये तेजियाँ तो जो है लगी रहती हैं. बट देन यू हैव टू सी इट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. एंड देन विद टाइम जैसे जैसे आप ग्रेस करते हैं या जैसे जैसे आप जो है बुजुर्ग की तरफ जाते हैं, तो बहुत सी जो है जिस्म में कमियाँ हो रही होती हैं. सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन योर बैलेंस, तो कुछ भी हो सकता है. यू माइट फॉल डाउन, you might get some kind of hip fracture, or you might have other kind of problems. So you need to maintain your balance. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सुबह सवेरे उठें तो अपनी आँखों को खुलने दें. Try to get up freshly and have your complete balance, and stay away from mobile and the gadgets. And plus इसके अलावा like these are the general observations which I observe every day, and it happens in every home. Like I won't say that it doesn't happen in my home. It does happen in my home. Like I do see people कि भाई वो बिस्तर से निकले हैं, सबसे पहले वो अपने जो है गैजेट्स देख रहे हैं कि भाई कोई हमारा वर्क पेंडिंग तो नहीं है, कोई बॉस की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, या कोई कलीग ने तो नहीं किया हुआ कि आज कौन सी मीटिंग है कौन सी मीटिंग नहीं है, कोई पेंडिंग वर्क ना हो. सो दीज आर द थिंग्स विच डू गो ऑन इन डिफरेंट लाइव्स. बट ये है कि इफ़ यू वांट टू embrace silence, if you want to search into yourself, search into your soul and find the real meaning, then you have to get away from these gadgets for some time. सो इंस्टेड कि भाई आप फ़ौरन जो है टीवी को ऑन कर लें या गैजेट्स में चले जाएं, तो यू शुड इंस्टेड ट्राई टू स्पेंड सम मिनट्स या इन क्वाइट कंटेम्पलेशन. या ये है कि जैसा मैं हूँ मॉर्निंग में वॉक पे चली जाती हूँ, दो आई हैव माई डिवाइस विद मी, बट इट्स नॉट दैट कि आई एम स्क्रोलिंग ऑन द डिवाइस. इट्स जस्ट दैट कि वो जो मेरा टाइम होता है, I'm observing nature, I'm observing the things in nature, and then I'm vlogging side by side and trying to share my findings with you, with the audience. कि भाई this is my finding, and this is what I feel looking at this thing. So this is what I use those gadgets for, but that is not right after I get up from bed. क्योंकि right after when I get up from bed, I do not look at gadgets. I have my prayer, I have my Fajr prayer, and then after that my day starts. So when I am doing my walk, so then there's plenty of gap between the time I get up and the time I go for walk. So अगर मैं walk पे जाकर जो है gadget use करती हूँ, तो then it's pretty much justified. But right out of the bed, right in the morning, early in the morning, I do not look at gadgets. So मैं आपको वही advices दूंगी जो कि मैं खुद follow करती हूँ, and I would want कि भाई you should also try looking at your life, और उनमें जो है अच्छी चीज़ें inculcate करें जो कि आपको help करें in the longer run. Okay, then आप जो है यानी how else can you embrace silence? Like when you are commuting, commuting में भी commuting is your transportation, कि आप किस तरह commute कर रहे हैं, चाहे आप कार पे कर रहे हैं. Like there are many people who like to walk to their offices. अगर offices ज़्यादा distances पे नहीं हैं, तो you can always walk. और या फिर ये है कि क्योंकि दैट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है यू कैन एम्ब्रेस साइलेंस. सो इफ़ यू आर वॉकिंग, देन यू कैन सेलेक्ट अ रूट जहाँ पर जो है इर्द गिर्द नेचर हो, या इर्द गिर्द जो है देयर समथिंग विच यू कैन ऑब्जर्व, like rather than even in cars. Zameen Rodhani, thank you so much for joining and watching this session. Like even while you're going in car, to just don't switch on the radio for listening to music,
या डिफरेंट जो है आप स्क्रॉल करते रहते हैं, चैनल्स चेंज करते रहते हैं, बट रादर जो है इफ़ यू नो जस्ट दो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द ड्राइविंग, बट ये है कि ड्राइविंग करते हुए भी यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज गोइंग around you na. And in that scenario, like if you are driving and if you're listening to music, you won't be concentrating on the road, rather you would be concentrating on the music and the lyrics and the words. So आपकी जो तमाम अटेंशन है वो उस तरफ हो जाएगी. So instead के अटेंशन को उस तरफ डाइवर्ट करें, what you can do is you can always have a look at the traffic and see where the traffic is going, या उसमें जो है कोई abnormality है या normal है, या किस तरीके से गाड़ियाँ जो है चल रही हैं, या इर्द गिर्द जो आपकी नेचर है आप उस नेचर को ऑब्जर्व करें. नेचर में जो है सुनने की कोशिश करें. इफ़ वाइल ड्राइविंग यू कैन लिसन टू दी मेलोडियस साउंड्स ऑफ, रादर वो जो मेलोडियस सॉन्ग आपको साउंड्स ऑफ सॉन्ग रखती है, अगर वही साउंड्स ऑफ आप नेचर सुनने की कोशिश करें. If the wind is blowing, listen to that wind. If the birds are cooing, listen to their voices. So ये जो सारी चीज़ें हैं, it's not only going to help you in embracing what is around you, बल्कि instead जो आपकी जो है inner faculties है, ये उसको भी highlight करेगा, and you'll be prone to listen more and develop your these faculties. क्योंकि अब तो विद टाइम जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो जितनी फैकल्टीज़ हैं वो उसी की तरफ जाती जा रही हैं. लाइक most of the time the ears would be more focused on gossips या trends या anything that's new, rather than focusing on the good things, listening to a good information. Yeah, even if you are in the habit of listening to podcasts या audio readers आपने लगाए होते हैं, you're listening to those, so they are also very useful and you learn a lot from them. And then they help you a lot, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी जो है नॉलेज अच्छी जो है बिल्ड होती है, बल्कि रादर you come to know about so much realities of life. Like the other day I was listening to a podcast, an audio podcast, and I was trying to analyze the things that were being said in that podcast. And I was thinking that लोगों से जब जो है philosophy की बात की जाती है तो they don't understand what is philosophy, they think it's philosophy. but जो philosophy है, या जो हमारे philosophers थे, या even जो western thought के भी philosophers थे, they had this deeper sense of knowledge and analyzing that knowledge. Like वो जो knowledge है, it is so much close to practical life. Like जो हमारे लाइफ के एसेंसेस हैं, या जो जिन चीज़ों पे हम बात करते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, इवन जिस तरीके से दिस थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट एम्ब्रेसिंग साइलेंस, दिस इज नॉट अ फिलॉसफी, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. लाइफ में अगर जो है इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ एम्ब्रेसिंग साइलेंस, तो साइलेंस ये आपको बहुत कुछ टीच करती है. साइलेंस लाइक इफ़ यू आर नॉट इनटू अ गुड रिलेशनशिप, and instead of bickering and fighting, अगर आप उसकी जगह जो है साइलेंस को प्रेफर करें, and you just tune yourself into silence and try to observe the relationship, and try to see कि where you are wrong या where the other person is wrong, तो आपको साइलेंस में बहुत कुछ सोचने का और बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है. और वो साइलेंस में जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिस तरीके से जो लॉयर्स होते हैं वो अपने जो आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए जो है दे फाइट केसेस, इन द सेम वे व्हेन as a couple you are observing the attitudes or the behaviors of your partners or spouses, या can be anything other than spouses, जो है आपके co-working environment भी हो सकता है. So when you're observing the behaviors of people and trying to come up with question and answer session अपने साथ कर रहे होती हैं, तो you exactly know कि भाई if you are silent and what the what is that power that silence can have. अगर जो है लाइक आपको जो है कोई आपको किसी चीज़ पे तैश दिलाता है और आप एकदम जो है गुस्से में आकर जो है कोई एरोगेंट बात कर देते हैं, और बाद में आपको होता है कि नहीं भाई ये इतनी एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए थी, इससे बेहतर होता कि मैं जो खामोश हो जाता. सो दिस इज़ द पावर ऑफ साइलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यू हैव टू व्हेन द टाइम इज, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो यू हैव टू टेक द मोड ऑफ बीइंग साइलेंट.
रादर देन कि भाई गुस्सा ना करें या मार कुटाई करें और फिर बाद में जो रिग्रेट करें कि ये नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ रिगार्डिंग साइलेंस। अच्छा, देन फिर इसमें जो है यानी और आप किस तरीके से एम्ब्रेस कर सकते हैं साइलेंस कि ड्यूरिंग मील टाइम। नाउ दीज आर द थिंग कि जो हम अपनी डेली लाइफ में ना ऑब्जर्व करें, चाहे हम कम्यूटिंग करें, चाहे हम वॉकिंग करें, इवन चाहे हम खाना भी खा रहे हैं। अब खाने में क्या है कि देयर वाज अ टाइम जब एक माइंडफुल जो है ना ईटिंग होती थी कि सारे घर वाले जो है कि टेबल पे बैठे हुए होते थे और बातें कम कर रहे होते थे और खाने पे फोकस ज़्यादा होता था। और ये चीज़ तो जो है वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाते हुए जो है कोई टीवी देख रहे होंगे या कोई गैजेट देख रहे होंगे या इवन आप बातें भी कर रहे होंगे, तो वो कहते हैं ना हत्थू लग गया, तो वो हत्थू इसी तरीके से लगता है कि भाई आप खाते हुए जो है कंसंट्रेशन आपकी कहीं और होती है और खाने का नवाला जो है सांस की नाली में चला जाता है। सो इस तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कि वो एक्सीडेंट्स कॉज हों, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। अगर आप खाना खा रहे हैं तो गैजेट्स वगैरह को सबको साइड पे रख दें। खाने की टेबल पे गैजेट्स लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी स्क्रॉलिंग करने से आपका खाना अंदर जल्दी नहीं चला जाएगा, रादर रादर आपके जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत से असरात हो सकते हैं विच आर नॉट गुड। बिकॉज हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो मोबाइल हैं, चाहे वो आईफोन है, दे हैव सो मच रेडिएशंस इन देम विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। अब के ज़माने में जो है पीपल आर मोर सिक एंड मोर इल फॉर द सिंपल रीज़न एवरी टाइम एंड एट any moment they have these gadgets in their hands और gadgets उनके सामने होती हैं। खाना पड़ा हुआ होता है और गैजेट्स की स्क्रॉलिंग हो रही होती है, एक हाथ में जो है स्पून मुंह में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, बट ये है कि वो गैजेट नहीं छोड़ना। सो यू हैव टू लर्न टू गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स। गैजेट्स को अपने खाने के टाइम अपने साथ नहीं रखना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, सुकून से खा लेंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे प्लस, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू ईट इन अ वेरी फास्ट मोड। अच्छा जी, हु इज़ दिस? अफकार अलवी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सो आपने जो है खाने के टाइम गैजेट्स को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप जो है पुरानी ट्रेडिशंस या पुराने ज़माने को जो है ऑब्ज़र्व करें, जो जब आपके आबा अजदाद जो है हयात थे या आपके जो है पेरेंट्स जो है, अगर से इफ़ यू आर इन योर 40s and 50s, you might be having parents who were used to in this habit of sitting on the dastarkhan and everyone is eating and focusing on the food and then having a little chit chat, not so much, but then उसमें क्या होता था, उसमें आपको खाने का स्वाद आता था। सो आपने जो है खाने का स्वाद लेना है, ट्राई टू ऑब्जर्व दी, जिस तरह नेचर में आप जाकर जो है बर्ड्स को ऑब्जर्व करें या फूल पत्तों को ऑब्जर्व करें, इसी तरीके से खाने का भी मज़ा लेने की कोशिश करें। वो इंसान जो आपके लिए पूरा दिन जो है किचन में रह कर जो है, चाहे आपकी बेटी हैं, चाहे आपकी बीवी हैं, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी अम्मी हैं, whoever that person is, if they are spending their whole day for you people to prepare a good food and present it in front of you, so as a responsibility and as a way of gratitude and gratifying for the things they are doing for you, you should rather sit down with them and appreciate the food, appreciate the texture. आप जो है जब इस तरीके से माइंडफुल ईटिंग करेंगे ना, जब आप गैजेट्स को साइड पे रख देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको खाने में खुद स्वाद आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल फील लाइक आपको वो जन्नत से ज़्यादा जो है ना खूबसूरत जो है खाना फील होगा। इतना अच्छा वो बना होगा क्योंकि उसमें मोहब्बत होगी, उसमें हाइजीन होगी, उसमें वो टाइम होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी जो कि हर घराने में होती है जब वो जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ खाना बनाने पे फोकस करे होते हैं एंड नॉट ऑन द गैजेट्स। So you have to inculcate these habits. अच्छा, Zahid Hussain, thank you so much for watching. And Zahid Hussain, why did you leave today's class? You were supposed to be in the class. आज आपने क्लास नहीं ली। I have given the homework. It's on WhatsApp group. ठीक है, उधर से जो है देख लीजिएगा। Okay. सो दिस इज़ रिगार्डिंग मील टाइम। अच्छा, देन जो है जिस मैंने आपको बताया, जब आप नेचर में वॉक करते हैं तो यू आर प्रोन टू ऑब्जर्व सो मच इन नेचर एज वेल, क्योंकि नेचर में जो है ना यू हैव टू इमर्स योर सेल्फ। जिस तरीके से नेचर में हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज है, इसी तरीके से व्हेन यू आर इन टू नेचर, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग नेचर, तो यू कैन ऑल्सो हार्मोनाइज विद इन द नेचर। आप
ब्लेंडेड फील करते हैं, यू डोंट फील एज इफ यू आर आउट ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर हैज़ दिस एबिलिटी ऑफ absorbing everything na. Even you yourself get immersed. Like I know when I am walking I am totally observed into nature, absorb मैं तो totally हो जाती हूँ, and I am not concerned कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि I am too much busy into doing the vlogging, taking the photographs of different areas of nature जो मुझे जो है affect कर रहे होते हैं और मुझे अच्छे appeal कर रहे होते हैं. So I am busy in enjoying nature thoroughly. देन उसमें क्योंकि उसका जो है फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू आर इनटू नेचर यू आर लिविंग बिहाइंड एवरी डिस्ट्रैक्शन, you are just focusing on the moment, you are in the moment and you are enjoying that moment, and that is what is the need of time. You need to be in the moment, you have to be present over there. आप जहाँ पर भी हैं, आप चाहे जो है अपने ऑफिस में हैं, लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि भाई आजकल जो बच्चे हैं या आजकल जो लोग हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, दे डोंट हैव फोकस. सो व्हाई इज this is because we have so much luxuries around us कि अगर हमारा जो है माइंड एक चीज़ पे जो है कंसंट्रेट नहीं करता तो हम दूसरी चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा चलो ये कर लें. सो वी आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग. सो इफ अगर आप अपने चॉइसेस लिमिट कर देते हैं rather than you have so much choices, so you just try to focus on one thing, उसको अच्छे तरीके से करें. if you are in nature, focus on nature. if you are doing your office work, then focus on your office work. if you are preparing for your exam, then focus on your exams. if you are learning a skill, then just focus on learning the skill. and if you are scrolling through your mobile, तो वो जो 3-4 घंटे उस पर लगने हैं तो उसको जो है आधा घंटा या 1 घंटे पे रिड्यूस करके then focus on the things that are productive and that are going to help you in the longer run. So this is Walaikum Assalam. Who is this? I know this is someone but I can't recall the name. अच्छा जी. Then उसमें जो है आप और क्या कर सकते हैं? I am fine. Api is fine. ओके देन आप इसमें जो एक ये भी कर सकते हैं, यू कैन टेक अ लेयर स्ट्रॉल इन अ नियर बाय पार्क या इन अ फॉरेस्ट एंड यू कैन बी टोटली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट एंड एंजॉय द सेरेनिटी. अच्छा, फिर इवनिंग में जो है आप क्या कर सकती हैं? इवनिंग में जो है आप जो है यानी बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन वाइंड अप एवरी एक्टिविटी. टीवीज जो है बंद कर दें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर चले जाएं. and what else you can do, you can create an atmosphere of soothe and calm. आपका environment जो calm होना चाहिए. like before sleeping आपके इर्द गिर्द यानी वो जो तेज़ रोशनियाँ होती हैं, you have to dim those lights ताकि आपका mind भी जो है आपको ये मैसेज दे कि it's night time and I need to sleep. आप अगर इसको हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल के साथ जो है कंपेयर करें या देखें तो अल्लाह ने जो है दिन और रात क्यों बनाए हैं? anyone would like to tell me in the comment, why do we have days and nights? Okay, so I'm just listening, I'm just looking at your comments. If anyone has any suggestion or anyone knows the answer, why do we have days and nights? Okay, so you can just tell me anything. I'm not going to say कि ये गलत है ये सही है. अच्छा, till the time you pour in your suggestions, like आप देखें ना कि हर चीज़ का एक मकसद है. We have days and nights cause days are for working and nights are for sleeping. So अब जो सिनेरियो है वो टोटली उल्टा हुआ है. नाइट के टाइम जो है काम हो रहे होते हैं और डे के टाइम जो है ना नींदें पूरी हो रही होती हैं. सो हर एक चीज़ का जो है एक सिस्टम होता है. नाउ these things like you can adapt certain things to a certain extent. बट ये है कि आप देखें जिस तरह अर्लियर इन सेशन आई टोल्ड यू कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो स्लीप के मुताबिक like you have to adjust it accordingly whatever suits your body. Now those people who are into remote working, definitely उनके clients different होती हैं, हर एक client की time zone different होती है. So you have to manage your time accordingly. अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर आप जो है रात भर जाग रहे हैं तो दिन के टाइम भी आप जागते रहें. बट देन आपने अकॉर्डिंगली जो क्लाइंट्स हैं यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट टाइम्स, कौन सा जो है मिड वे आप लोग निकाल सकते हैं और उसके मुताबिक आपने काम करने हैं. बट एनी थिंग दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ, अगर आप रात रात भर जो है क्लाइंट्स के जो है
टास्क पे काम करते रहते हैं और आपका जो है अपना सिस्टम ये है कि आप जो है रात को जाग ही नहीं सकते, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक सच टास्क. ठीक है, some tasks they might be very fulfilling and they might be very well paying, but then you are not going to compromise your health, क्योंकि health है तो wealth है. So this is not just in the verbal sense कि when you have health you have wealth. This is also very much true in the real sense कि if you do not have health you are not going to, वो आपकी wealth जो आप कमा रहे हैं वो आपके किसी फायदे की नहीं होगी, rather it's just going to go to waste. Cause without health you won't be able to enjoy what you want to enjoy, और उस wealth को कमाने के लिए आप अपनी health को compromise करेंगे. So no compromising on health, no compromising on your sleep. If you want to work, manage your time, make a balance between your professional life and your personal life. Or personal life में it's not just the spouse and partner life, your family life, it's ओवरऑल इसमें आपकी हेल्थ भी आती है, सेल्फ केयर भी आती है. सो दैट्स इंक्लूडेड इन द पर्सनल एस्पेक्ट एज वेल. सो then in the end what I would like to say is that if you observe, if you embrace, if you even try to embrace silence, उससे जो है आपको क्या नतीजे मिलेंगे. उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, उससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, उससे आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, उससे जो है आपकी जो माइंडफुलनेस है वो इंक्रीज होगी. एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, यू विल हैव इनर पीस. अभी जो बेचैनी तबीयत में रहती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टाइम इधर निकल गया, टाइम उधर निकल गया, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी इन लाइन फॉल करनी शुरू कर देंगी. क्योंकि you will be analyzing yourself and you will be reaching your real potential, जिसके लिए आपको पैदा किया गया है या जो आपका शायद मकसद है. So you have to focus on these things. निसा तरीन, you're saying अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या साइलेंस को अडेप्ट करने के लिए ज़रूरी है we connect with nature? You can connect with many things, but nature, आई वुड से जिस तरीके से जो है हर चीज़ के लिए थेरेपी होती है ना, नेचर इज़ अ वेरी गुड थेरेपिस्ट. सो रादर देन यू फोकस ऑन लाइक थेरेपिस्ट, दे आर गुड नो डाउट, अगर आपके जो है जस्ट डिपेंड्स कि आपकी क्या कंडीशन है, बट नेचर इज़ अ रियली गुड थेरेपिस्ट and you get a lot of good vibes when you are in nature. So you have to, like, if you even अगर आप नेचर में, like if you don't want to go in nature, या आपके जो है इस तरीके के environment नहीं है, you go out in the nature, you can just make a place in your home and just observe that silence in your home, within your four walls. ये उन लोगों के लिए who cannot go out. But then again आप जो है साइलेंस को एम्ब्रेस करने के लिए you can do many things. You can do meditation, you can do deep breathing exercises, you can do yoga, you can play some kind of Celtic music in your foreground, and then you can close your eyes and you can embrace silence. So it's not necessary कि भाई आपने नेचर में जाना है. नेचर का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आई माई सेल्फ फाइंड कि भाई नेचर में आपको जितनी पीस और सेरेनिटी मिलती है वो शायद आपको जो है बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करने से नहीं मिलती. बट देन एवरीथिंग वर्क्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पीपल. आई माइट बी अ डिफरेंट इंडिविजुअल. मुझे नेचर जिस तरह इफेक्ट करती है हो सकता है आप लोगों को उस तरह इफेक्ट ना करे. बहुत से लोगों को जिस तरह रीडिंग इफेक्ट करती है वो मुझे उस तरह इफेक्ट नहीं करती. एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड, गैजेट्स की बजाय ट्राई टू डू प्रोडक्टिव थिंग. जर्नलिंग कर लें, आर्ट्स की कोई चीज़ कर लें. इफ़ यू आर गुड इन ड्राइंग और इफ़ यू लाइक टू डू ड्राइंग, यू कैन ऑलवेज get into journaling or drawing something, or you can practice meditation या yoga कर लें. So these are good tips and these are good things जो कि आपको embrace करने में, silence embrace करने में help करती हैं. So Nisa, I hope I was able to answer your question. So if you do not want to go into nature, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. आप जो है अपने घर पे अपने फोर वॉल्स के अंदर भी जो है साइलेंस को एम्ब्रेस कर सकते हैं. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा, देन वन मोर थिंग इज़ कि भाई जब आप
अपनी लाइफ में जो है मोमेंट्स ऑफ साइलेंस को जो है एम्ब्रेस करते हैं इनटू डेली रूटीन्स, तो आप जो है ना ज़्यादा you'll feel clear, you'll have clarity, you'll have creativity, और देन यू विल ऑल्सो हैव कंटेंटमेंट। क्योंकि अभी जो रुझान है या अभी जिस तरीके से मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, कंटेंटमेंट बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। everyone is running after something, so you need to be contented, and contented it's one of the basic principles and elements of our religion as well. We need to be contented, और contentment जो है again it comes from within। अगर जो है आपके अंदर जो है बेचैनी है और आपके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, तो बाहर जो है आपके पास जो है ना सोने जेवरात भी होंगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी कंटेंटेड। सो यू हैव टू, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि यू हैव टू सर्च विद इन यूर सेल्फ हु यू आर, और when you are able to do that, when you will be able to transform yourself, और ये सारी चीज़ें तभी होंगी when you are ready to make a positive change, when you're ready to let your mind grow, when you're ready to accept things as they are, rather than कि अपने ऊपर जो है आप चीज़ें जो है सवार करने की कोशिश करें। when you are ready to accept who you are, and when you are ready कि भाई अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, you have to make the best of those सलाहियतें, rather than looking at other people, या rather than comparing yourself or competing yourself with other people कि भाई इनके पास ये है और हमारे पास ये नहीं है। जब आप ये सब चीज़ें छोड़ देंगे ना, तो then you will find the ultimate success, and then you will start thinking yes, this is what success is। और फिर उसके बाद जो philosophers हैं या उनकी जो philosophies हैं वो philosophies नहीं लगेंगी। then you will acknowledge yes, this is real life, this is not just philosophy। हमें वो philosophy क्यों लगती है? क्योंकि we are at different stages in our transformations, और उसमें ये होता है कि when we are not ready to accept ourselves, तो हमें जो विजडम की बातें हैं वो यही लगता है कि ये फिलॉसफी है, क्योंकि वो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह साइलेंस हैं, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ यू जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट, तो आपको पता चलेगा कि भाई इट्स नॉट अ फिलॉसफी, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। So you can bring out examples from your daily life, and it's it's in front of us, बस वो हमें नहीं नज़र आता, हमें एक टाइम के बाद वो चीज़ें नज़र आनी शुरू होती हैं, and it's not abnormal, it's very much normal। Tayyib Tariq, thank you so much for joining। So it's very much normal, we just need to analyze, we just need to observe things। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बस हमारा टाइम वो नहीं होता कि हम उसे ऑब्जर्व करें, और जब हमारा टाइम आता है तो तब तब जो है चीज़ें जो है खुल के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। सो ऑलवेज बी प्रोडक्टिव, ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोमेंट्स ऑफ साइलेंस इन योर लाइफ, चाहे वो जो है दिन में जो है 15-20 मिनट ही हो। आप जो है स्टार्ट तो करें, तो आगे आपके लिए जो है चीज़ें खुद जो है अयां होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल what I wanted to share today regarding embracing silence. Now, if you have any other questions, you can let me know. I can see someone at the top of my screen, so I'm just going to take whoever this person is live on camera. So if you want to come live, you will have to accept, or otherwise अगर आप नहीं आना चाहते तो you can decline। Tayyib Tariq, would you like to join me live on camera? Okay, and adding this person, these looks like flowers or something. If I just say, like if I talk, then what happens is maybe आवाज का chorus में चल जाती है. I try not. So I just hope कि next connection का कोई issue ना हो. Still adding, I do not know. So whoever this person is, this is Nisa.
Nisha, is there some kind of connection problem at your end? Okay, so the connection is okay. Sayyid Farouk, would you like to come live on camera? Okay. So, guys, I think there's no one who wants to come live on camera. So, either you have wind up session ko, or inshallah, after your morning mulaqat will be vlog in the morning and in the evening in this session. So, whatever the topic would be, I'll be letting you know 10 minutes before the session that what I plan to do. So, till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.